अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग द वर्ल्ड इन अ वॉल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैंने इसका चैप्टर भी पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डज जिरोल हंट्स फॉर एनिमल्स एंड व्हाई इज इट अ गुड प्लेस टू फाइंड देम? द आंसर इज Jirol hunts for animals in an ancient crumbling wall that surrounds his garden. It is a good place to find animals because many different creatures live in the cracks of the wall and under the bulges of the old plaster. Question 2. Make two lists of animals under the following headings. Number 1. Animals that Jirol finds during the day. Number 2. Animals that Jirol finds at night. So the answer is animals that Jirol finds. Number 1 in the day, hunting wasp, caterpillar, spiders, flies, dragonflies, wall lizard. At night, toads, jackals, crane flies, moths. The next question, question C. Explain who the following characters are and find information about what happens to them in the text. Answer: Larry, Jirol's older brother. He talks a lot. He is an adult. He smokes and thinks the matchbox that Jirol has used is one full of matches. He flings his arm out when he sees the scorpion. He does not share Jirol's love of animals. The shock of the incident makes him scared of matchboxes. Number 2. Roger, a pet dog. Jirol's like him and feeds him at meal times. Even though he is not supposed to, he barks wildly when the incident happens. Jirol takes him on walk. He is a companion to Jirol. Question D. What does Jirol thinks the female scorpion is wearing? What gives her the appearance? Answer: Jirol thinks the female scorpion is wearing a pale fawn brown fur coat. All her babies are clinging to her back, which is what creates the impression that she is wearing a fur coat. Question E. Why does Jirol forgets about the scorpions after he has put them in the matchbox? The answer is Jirol forgets about the scorpions because he gets busy with feeding the Rogers lunch. Question F. What happens to Jirol's mother during the chores at the end of lunch? Chores कहते हैं शोर शराबे को. So the answer is Jirol's mother is shocked by water after Margot tries to throw it at the scorpions and misses. Jirol's mother is so shocked that she is felt gasping and unable to speak. The next question G. Why does Jirol stays away from the family in the afternoon? The answer is Jirol stays away from the family in the afternoon because he knows they blame him for the incident that happened earlier at lunch and wants to keep out of their way. The last question is H. What are the repercussions of the incident? The answer is the repercussions of the incident are the Jirol develops a phobia of matchboxes and his mother decides to stop Jirol from exploring the animal world by getting him a tutor. So now question answers are finished. This is the next exercise. These questions are more difficult. Discuss them first. Question 1. Why do you think that this chapter is called The World in a Wall? Answer: I think that this chapter is called The World in a Wall because most of the Jirol's life was spent with wall, hunting different types of insects. The next is work with others to fill in the Venn diagram below with the names of creatures mentioned in the story. So children, आप लोगों ने क्या करना है, प्रे और प्रेडिटर्स यहाँ पे वेन डायग्राम दी गई है. वेन डायग्राम एक मैथ की एक डायग्राम होती है, उस टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है.
तो इसमें इन्होंने कहा है कि प्रे और प्रेडिटर्स जो हैं इस स्टोरी में जो दिए गए हैं, जो आप लोगों ने सबक पढ़ा था उसमें जो प्रे और प्रेडिटर्स हैं वो अलग अलग करने हैं। प्रे कहते हैं शिकार, जो शिकार बनता है, और प्रेडिटर जो शिकार करता है। तो जो शिकार करता है उसके नाम लिखने हैं और जो शिकार बनता है उसके नाम लिखने हैं। आप लोग जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा और आप लोग सारे वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ। प्रेडिटर में यानी कि जो शिकार करता है छिपकली, लिजर्ड, यहाँ पे मैं लिजर्ड लिखूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्लाइज, क्योंकि लिजर्ड फ्लाइज को खाती है। लिजर्ड जो है प्रेडिटर है और फ्लाइज जो हैं वो प्रे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।